Hello students, today I am going to discuss two more important topics. One is corrosion and the another one is rancidity. So first I am going to discuss corrosion. What is corrosion? Corrosion is a process of degradation of metals by the action of air, water and other chemicals present in the atmosphere. हमने देखा होगा जो मेटलिक बॉडीज होती हैं लाइक कार, ट्रेन, रेलिंग्स, शिप, तो इनकी जो सरफेस है मेटल सरफेस वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, स्लोली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर. सो दिस इज नोन एज कोरोजन. इसमें क्या होता है, मेटल का बहुत लॉस होता है एंड फाइनली इकोनॉमिक लॉस होता है. सो दिस इज नॉट अ गुड प्रोसेस. ठीक है, it is a wasteful process. Now how to define corrosion? So the degradation of metals, slowly degradation of metals by the action of air, water and other chemicals present in the atmosphere. Now for the example, the rusting of iron is the most common example of corrosion. So first is the rusting of iron. Is common example of corrosion. What is the rusting of iron? Just slowly eaten above the surface of iron by the action of air and water. तो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो आयरन का जो लेयर होता है, ऊपर का सरफेस होता है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है. सो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन दे देता हूँ, आयरन का जब एयर मीन्स ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये फॉर्म करता है Fe2O3 एंड X H2O. X molecules of water are associated with the formula of Fe2O3. तो ये क्या है, रस्ट. दिस इज नोन एज रस्ट. कैसे ब्राउनी कलर की होती है. दिस इज आयरन, ऑक्सीजन and water. So rusting of iron is the most common example of corrosion. There are so many examples of corrosion. Most of the metals are corroded by the action of air, water and other chemicals. For example, corrosion of copper, कॉपर का corrosion, ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O की प्रेजेंस में, कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में केमिकल मिक्सचर बनाती है CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3 एंड इट इज ग्रीनिश कलर का होता है. ये ग्रीन कलर रस्ट जो इसके सरफेस पर कोटेड हो जाती है. कॉपर के वेसल्स देखे होंगे, कॉपर के वेसल्स पर ग्रीन कलर की एक कोटिंग लग जाती है. दैट इज कॉल्ड ग्रीनिश कलर रस्ट. जो क्या मिक्सचर है CuOH का होल ट्वाइस एंड CuCO3 का. वन मोर एग्जांपल हियर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. तो corrosion of silver
सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के प्रेजेंस में एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फॉर्म करती है Ag2S+H2O। ये क्या होती है? टार्निश्ड सिल्वर, मतलब इसकी जो शाइनी है अपीयरेंस है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपनी जो शाइनी अपीयरेंस है वो खो देती है एंड इट इज नोन एज टार्निश्ड सिल्वर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ corrosion of metals. Now, what are the effect of corrosion? So, corrosion is not a good process. It is a wasteful process. So, there are so many effects. तो effects नोट कर लेते हैं of corrosion. फर्स्ट तो ये है कि corrosion का इफेक्ट ये है कि it causes of damage of all metallic objects. Causes of damage of all metallic objects. ठीक है, such as body of car, ship, bus, etc. Second, it is a wasteful process which causes of heavy economical loss. Every year. इसकी वजह से क्या होता है? हमें काफी इकोनॉमिकल लॉस होता है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स by which we prevent the metals from corrosion? How the metals can be prevented from corrosion? So methods of prevention. So there are so many methods of prevention. The first is oiling and greasing. तो ये मशीनरी टूल्स और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उस पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं। मशीनरी टूल्स पर क्या करते हैं? ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं। इससे क्या होता है? उसको कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मशीनरी टूल्स एंड पार्ट्स corrosion by oiling and greasing. Second, galvanization. It is a process of coating of zinc layer on metal surface, especially on steel and iron. तो आयरन और स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर क्या करते हैं? जिंक की एक लेयर की कोटिंग कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। द कोटिंग ऑफ जिंक लेयर टू प्रिवेंट द मेटल ऑब्जेक्ट from corrosion. Third is chrome plating.
इसमें क्या करते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ electroplating of chromium. Metal to prevent the metal objects from corrosion. जो क्रोम प्लेटिंग से एक तो कोरोजन से प्रिवेंशन हो जाता है, दूसरा यह है कि शाइनी अपीयरेंस मिल जाती है, और जो मेटल सरफेस है उसके लिए हार्डनेस भी प्रोवाइड करती है क्रोमियम. तो इसलिए क्रोमियम प्लेटिंग के बहुत एडवांटेजेस हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ coating a thick layer of oxide to prevent metal, especially aluminium, from corrosion. तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के एलॉयज को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एक थिक लेयर को उसके ऊपर कोट कर देते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक्चुअली कोटिंग क्या कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हैं. ओके, सो these are the processes or methods of prevention of corrosion, and the next topic is rancidity. The second topic is rancidity. It is a process of oxidation of oils and fat. So it is a process of oxidation of oils and fats present in food, which causes of unpleasant smell and bad taste. Okay, so what is rancidity? It is a process of oxidation of oils and fat present in food. फूड में जो ऑयल और फैट होता है उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है. इस ऑक्सीडाइजेशन की वजह से क्या होता है, उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं. तो स्मेल और टेस्ट तो चेंज होते ही हैं, लेकिन द रेंसिडिटी इज अ कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो इसमें पॉइंट नोट कर देंगे, रेंसिडिटी causes of health problems. ओके, तो रेंसिडिटी से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन फ्रॉम rancidity means what are the methods of prevention. So first, refrigeration. ऑफ फूड, हम क्या कर सकते हैं, फूड का रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं. हम उसको कोल्ड प्लेस पे स्टोर करके रख सकते हैं. तो सेकंड, द पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स like potato chips with
नाइट्रोजन गैस। ओके, सो इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिलिंग इन फूड पैकेट्स like potato chips, etc. Third one, by adding of antioxidants like BHT and BHA. What are BHT, BHA? तो इसकी फॉर्म लिख लेते हैं BHT. It is butylated hydroxy toluene or BHA. It is butylated hydroxy anisole. So these are the methods of prevention from the rancidity. And BHT, BHA एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो क्या करते हैं ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं किसका, फूड और फैट का।